स्टूडेंट्स आ प्रीवियस वीडियो रे आमे एक नंबरटा करथिले पांचटा फार्मूला लिखि देइथिले ता डिराइव करथिले एक नंबरटा कर देइथिले एक नंबर भलिया मोर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करिया पई कहिथिले आज मु कर दउची मन चेक करियो ताले 2 नंबर फर्स्ट आई क्वेश्चन कोन देइची इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 is equal to integration of dx by clearly जानी पारथबो एटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म को आसी परिबो एटा x स्क्वायर करिबा पई हमें कोन करिबा ना √3x रो स्क्वायर कर दबा प्लस एटा को √7 रो स्क्वायर कर दे परिया देन x जगह रे जेहेतु √3x रहिला तन ताको सब्स्टिट्यूट करिया पड़िबो लेट √3x is equal to t. So that implies d by dx of √3x is equal to dt by dx. That implies √3 constant रहिले x रो डेरिवेटिव 1 एपट आसिला into dx is equal to केते हला dt और that implies dx is equal to 1 by √3 into dt. So substituting this in this we get dt is your 1 by √3 into dt divided by this is your t square plus √7 square and then this is equal to 1 by √3 is your constant integration of dt by t square plus √7 square by the formula integration of dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a. It is now 1 by √3 into 1 by a is your √7 tan inverse t by √7 plus c which is equal to 1 by √7 into √3 is your √21 tan inverse t is your now √3x √3x by √7 plus c. Okay, next 2i. So what is your question? Integration of e to the power 4x by e to the power 8x plus 4 into dx. If we convert express this in the form of x square plus a square, then definitely we can write this as e to the power 4x by the square of e to the power 4x plus the square of 2 and then we have to substitute e to the power 4x. Let e to the power 4x is equal to t. That implies a differentiate both sides with respect to x. D by dx of e to the power 4x is equal to dt by dx. That implies 4 e to the power 4x. What is your derivative of e to the power 4x? 4 e to the power 4x into dx is equal to dt, or that implies e to the power 4x into dx is equal to 1 by 4 dt. So substituting this we get e to the power 4x dx is your 1 by 4 into dt by t square plus 2 square, then which is equal to 1 by 4 is your constant integration of dt by t square plus 2 square by the formula dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a. It is now 1 by 4 into 1 by a is 2 tan inverse x is your t by a is your 2 t by 2 plus c and that is equal to 1 by 8 tan inverse
t is your now e to the power 4x by 2 plus c. Okay. Next number third I. So what is your question? Integration of dx by x into ln x whole square plus 9. Sorry, plus 25. Which is equal to integration of dividing numerator and denominator by x. If we divide numerator by x, then we get this is your 1 by x into dx by at x cancel and we get ln x square plus 25. Now mark it in x square plus a square. In case of x square there is ln x. So let ln x is equal to t. So that implies d by dx of ln x is equal to dt by dx. That implies derivative of ln x is your 1 by x into dx is equal to dt. So which is equal to integration of dt by t square plus 5 square and now is equal to 1 by a tan inverse x by a means t by 5 plus c. Always write the formula integration of dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Then this is equal to 1 by 5 tan inverse t is your ln x by 5 plus c. IV integration of sec theta tan theta divided by sec square theta plus 4 into d theta. Clearly the derivative of sec theta is your sec theta into tan theta. So substitute sec theta is equal to t. Let sec theta is equal to t. So that implies d by d theta of sec theta is equal to dt by d theta. That implies sec theta into tan theta into d theta is equal to dt. So this is equal to now dt by t square plus 2 square which is equal to 1 by a tan inverse t by 2 plus c. Use the formula integration of dx by x square plus a square is your 1 by a tan inverse x by a. Now this is equal to 2 by 2 tan inverse t is your sec theta by 2 plus c. Okay. Next is what question? X to the power 9 by integration of x to the power 9 by x to the power 20 plus 4 which is equal to x to the power 9 into dx by, mark it, this is your x to the power square of x to the power 10 plus 2 square. So in case of x, what is there? X to the power 10. So let x to the power 10 is equal to t. That implies d by dx of x to the power 10 is equal to dt by dx. So that implies
10x to the power 9 nx to the power n minus 1 into dx is equal to dt implies x to the power 9 into dx is equal to 1 by 10 into dt. So now this is equal to integration of 1 by 10 into dt divided by t square plus 2 square, which is equal to 1 by 10 integration of dt by t square plus 2 square, which is equal to 1 by 10 into 1 by a tan inverse t by 2 plus c, which is equal to 1 by 20 tan inverse t 0 x to the power 10 by 2 plus c. Use the formula integration of dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Then is your vi integration of 3x plus 4 divided by x square plus 4. ये गोटा ट्विस्ट आसला समस्त देख पिला माने आमर जो यही फॉर्म थी दिस इज ए स्पेशल फॉर्म माइंड इट मन रखा भल कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जदि फॉर्म रे थाए दैट मीन्स तुमर न्यूमरेटर टा गोटा लिनियर एक्सप्रेशन रे अछि कोदर अछि लिनियर एक्सप्रेशन पी एक्स प्लस क्यू एंड डिनोमिनेटर टा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अछि दुई घात रे अछि सेतिक बेले सब बळे लक्ष्य करिवो यार डेरिवेटिव केते एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिनोमिनेटर जोटा अछि तार डेरिवेटिव केते आसुछि ना बर्तमान देखो एटी हमर डेरिवेटिव केते आसुछि एक्स स्क्वायर प्लस 4 रो डेरिवेटिव हो जाउछि 2x तेनु आको दीटा एमिति सेपरेट करिबा कोन करिबा ना गोटा करिबा 3x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 गोटा 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 गोटा then which can be written as 3x by x square plus 4 into dx plus 4 by x square plus 4 into dx, which is your now I1 plus I2. We can say or write, assume that this is equal to I1 and this is equal to I2. आमे जो ए फॉर्म नेले काहे नेले ना तुमे जते बेले आर डेरिवेटिव टा देखिछ ठी तुमे आनिछ फर्स्ट डेरिवेटिव केते आ गोटे क्वेश्चन आमे डिस्कस करले ताको देखि दबा यार इंपोर्टेंस टा कोन ना मु एटा सॉल्व कर दउची ताले I1 टा केते ना I1 होची इंटीग्रेशन ऑफ 3x by x square plus 4 so let x square plus 4 is equal to t, which implies d by dx of x square plus 4 is equal to dt by dx, which implies x square derivative 2x plus 4 ra 0 into dx is equal to dt, which implies x into dx ताले केते हबो half dt. So this is equal to now integration of 3 into x dx is your half dt divided by t, x square plus 4 is your t. Now the constant is 3 by 2 integration of dt by t, which is equal to 3 by 2 ln t plus c1 I1 pai kon naba c1, then this is equal to 3 by 2 ln t is your x square plus 4 plus c1 and I2 is your now so what is your I2 is equal to integration of 4 by
x square plus 4 into dx which is equal to 4 is the constant ताको बाहर को नहीं जाओ एटा रहला dx by x square plus एटा रहला 2 square then 4 into 1 by a tan inverse x by a plus c2 i2 by c2 नबा which is 2 cancel हो गेले 2 tan inverse x by 2 plus c2 i1 ର वैल्यू पाइले इंटीग्रांड ता i2 ର इंटीग्रल पाइले ताले सो देयरफॉर हम क्वेश्चन कोन दिया आइतला ना 3x plus 4 by x square plus 4 into dx is equal to केते हबो ना i1 पाई हमें पाइले केते 3 by 2 ln x square plus 4 plus c1 plus i2 is equal to 2 tan inverse x by 2 plus c2 एटा हबो केते ना 3 by 2 ln x square plus 4 plus 2 tan inverse x by 2 plus c1 c2 दीटा कांस्टेंट मिसी के गोटाई कांस्टेंट c हे गेला दिस इज द आंसर है ना नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि v double I integration of dx by x square plus 6x plus 13 it is a form of dx by ax square plus bx plus c जते बेले इंटीग्रेशन ऑफ dx by ax square plus bx plus c फॉर्म थिबो ता माने हम ता प्रीवियस क्वेश्चन रे जो डिस्कस करतली कोन डिस्कस करतली ना सेटा p ऊपर थिला लिनियर फॉर्म तळे थिला क्वाड्रेटिक फॉर्म एठी कोन आइची केवल तळे रहिची क्वाड्रेटिक फॉर्म जदि केवल तळे क्वाड्रेटिक फॉर्म थाए तुमे 10th क्लास रे पूर्ण वर्ग कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढिथिबो पूर्ण वर्ग रे परिणत कर एटा को हमको पूर्ण वर्ग रे परिणत करिया पड़िबो ताले एठी कोन करिवा देखिबा एटा जदि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करिबा ताले एटा हबो dx by x square plus 2 into x into 3 हेले एटा 6x हबो तना हमको डेफिनेटली एटी कोन करिया पड़िबो ना 3 रो स्क्वायर 9 ऐड करिया पड़िबो मिसिया को पड़िबो यदि मिसेले फेडिबा देन प्लस 13 रहिला इंटीग्रेशन ऑफ dx by जार पूर्ण वर्ग रो असुविधा होची टिके पूर्ण वर्ग देखि दबो देखि देखि एटा करिवो हैला dx by बर्तन एउठे पर्यंत केते हबो x plus 3 रो स्क्वायर येला -9 plus 13 हे गेला plus 4 उन्हें x square minus 2b तने a square plus 2ab plus b square दिस इज योर 3 रो स्क्वायर हे गेला a plus b रो होल स्क्वायर तापर एठी जो रहिला -9 plus 13 दिस बिकम्स plus 4 तापर देखो x जगह रे कोन रहिला x plus 3 ताको सब्स्टिट्यूट करिवा तो लेट x plus 3 is equal to t that implies d by dx of x plus 3 very same procedure is equal to dt by dx which implies 1 x rala 1 3 ro 0 1 into dx that means dx is equal to dt so this is equal to now dt by t square plus 2 square केते हबो ना एटा हबो वर्तमान 1 by a tan inverse x ला t by a t by 2 plus c and which is equal to 1 by 2 tan inverse t is your x plus 3 by 2 plus c हे गेला तापर कोन दैछि v थर्ड आई रे v थर्ड आई दैछि जे x plus 5 by x square plus 6x plus 13 into dx एटी मार्क करो ऊपर लिनियर आसिला तळे क्वाड्रेटिक आसिला जदि ऊपर लिनियर फॉर्म तळे क्वाड्रेटिक फॉर्म px plus q by ax square plus bx plus c थाए आगे देखिबो
डिनोमिनेटर डेरिवेटिव केते होउछि एटी रफ कर दियो मु जदी आर डेरिवेटिव निए डी बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 निए x स्क्वायर डेरिवेटिव केते हबो 2x 6x र डेरिवेटिव केते हबो 6 ताले एठी 2x प्लस 6 फॉर्म करिबा केमिति फॉर्म करिबा ना वर्तमान देखो मु वर्तमान 1/2 into 2 कर दे पारिबी एठी एतला 1/2 into 2 कली एटा हे गेला 2x plus 10 divided by x square plus 6x plus 13 into dx मु कोन कली ना 2 डिवाइड कली 2 मल्टीप्लाई कली 2 जेतले मल्टीप्लाई करिबी कोडी मल्टीप्लाई करिबी न्यूमरेटर रे लब रे एठी एतले 2 गुणीबी एटा कोन हबो 2x plus 10 हबो कि नाही अच्छा नेक्स्ट हमर कोन स्टेप रहिला ना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ हमर दरकार केते ना एठी दरकार आर डेरिवेटिव 2x plus 6 दरकार 2x पाई सारी छी 2x plus 10 टाको भांगी दियो 6 plus 4 divided by x square plus 6x plus 13 into dx then this is equal to 1/2 integration of 2x plus 6 by जेमते बुझौतले प्रीवियस वीडियो रे a plus b by x एटा को x तरह एटा करियो a by x plus b by x एको करियो 2x plus 6 by x square plus 6x plus 13 एको करियो plus 4 by x square plus 6x plus 13 whole into dx then which can be written by 1/2 integration of 2x plus 6 by x square plus 6x plus 13 into dx integrate separately plus eta rahiba 1/2 integration of 4 by x square plus 6x plus 13 into dx which is equal to now I1 plus I2 now what is your I1 I1 is your now integration of 2x plus 6 by x square plus 6x plus 13 into dx so let's first I1 रे तुमे जतबे आर डेरिवेटिव टा एटी फॉर्म करिथिलो तन ए टोटल टा को t धरिबो सबले let x square plus 6x plus 13 is equal to t that implies d by dx of x square plus 6x plus 13 is equal to dt by dx or that implies eta la 2x plus 6 हम already discuss करि सारी छे into dx is equal to dt which is present in the question now हमें सेहिति पई एटा को फॉर्म करि छे ताले केते हबो इंटीग्रेशन ऑफ dt by t clearly which is equal to ln t plus c 1 which is equal to ln t is your x square plus 6x plus 13 plus 1 केते इजीली इंटीग्रेट हे गेला बुझी पारलो हां देन I2 टा कोन आसिला ना I2 is your now integration of 1/2 पूराटा नबो कांस्टेंट सहित 1/2 into 4 by x square plus 6x plus 13 into dx ओ एटी 1/2 टा छाड़ देइथिले कि एटी 1/2 टा रहइबो मटे 1/2 टा छाड़ देइथिले रखिबो 1/2 रहले एटा हाफ रहइबो एटा बर्तन केतेला हाफ into this and now this is your 4/2 4 कांस्टेंट को बाहर नै आसा 4/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx by एटी देखो न्यूमरेटर रे किछि रहिलानी खाली dx by एटी कोन हे गेला क्वाड्रेटिक हे गेला ताको कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दियो पूर्ण वर्ग x स्क्वायर प्लस 6x 8 मध्य हमें ताको करि परिबा 9 plus 4 एकाधर भी करि परिबा 9 plus 4 13 हेले x स्क्वायर प्लस 6x plus 9 टा तमर हे जिवो x plus 3 रो होल स्क्वायर देन दिस इज इक्वल टू 4/2 is 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x plus 3 रो स्क्वायर plus 2 रो स्क्वायर then let x plus 3 is equal to y t नहीं थिला y नहीं जिवो that implies d by dx of x plus 3 is equal to dy by dx or that implies x रो 1 3 रो 0 हेले 1 into dx is equal to केता हो dy
Now this is equal to 2 integration of dy by y square plus 2 square, which is equal to 2 into 1 by a tan inverse y by 2 plus c2 by the formula integration of dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. Then this is equal to now half to cancel tan inverse y is your x plus 3 by 2 plus c2. So therefore हम जो क्वेश्चन दिया था लिखिब इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 बाय x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इंटू dx हम तक कोटी एंड करथिले i1 प्लस i2 पाखरे तापर i1 र वैल्यू i2 र वैल्यू अलग अलग बाहर कले तापर बसै दबा आ को इज इक्वल टू i1 केते हितला 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस c1 plus i2 is equal to tan inverse 3/2 x plus 3/2 plus c2 which is equal to 1/2 ln mod x square plus 6x plus 13 plus tan inverse x plus 3/2 plus c1 plus c2 में से गोटे कांस्टेंट c हेगला हैला तार बर्तन 2 नंबर कंप्लीट हैला 3 नंबर देखिए तीन नंबर देखा 3 नंबर आई कौन देला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9 ये देखो एटा हम करि परिबा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एटा है गेला 2x रो स्क्वायर माइनस 3 रो स्क्वायर तो एठी जते बेले 2x रहिला एठी 2x करबा पड़िबो तन तळे ऊपर 2 गुणी दियो 2 into dx divided by 2x into square root of 2x square minus 3 square. Let 2x is equal to t. That implies d by dx upon 2x is equal to dt by dx. There 2 into dx is equal to dt. Now this is equal to dt by dt by this is your now t into root over of t square minus 3. What is your formula? Integration of dx by x into square root of x square minus a square is your 1 by a sec inverse x by a plus c. Putting this formula we get this is equal to 1 by a is your 3 sec inverse t by 3 plus c which is equal to 1 by 3 sec inverse t is your 2x by 3 plus c. Okay, then 3 number 2 I kondala integration of dx by square root of e to the power 4x minus of 5. देखो integration of dx by whole under root e to the power 4x is your now the square of e to the power 2x. ताने डेफिनेटली मु e to the power 2x टा को सब्स्टिट्यूट करिबी फॉर्म को जिबा पई जदी मु सब्स्टिट्यूट करे लेट e to the power 2x is equal to t
that implies d by dx of e to the power 2x केते हबो dt by dx. So then that implies e to the power 2x रो e to the power 4x रो कहउथिली 4 e to the power 4x e to the power 2x रो 2 e to the power 2x e to the power ax रहउची a e to the power ax formula into dx is equal to dt. That means हमको 2 e to the power x into dx टा जगह रे dt बसेबा को पड़िबो. तेणु एठी कोन करो ना कर दियो इंटीग्रेशन ऑफ 2 e to the power 2x into dx dt पाइबा पई डिवाइडेड बाय एठी पुणी जदी न्यूमरेटर गुणिलो डिनोमिनेटर गुणिबो 2 e to the power 2x होल अंडर रूट e to the power 2x रो स्क्वायर माइनस 5 को करिछ रूट 5 रो स्क्वायर. नाउ वर्तमान देखो 2 e to the power 2x dx जगह में कोन बसैबा dt by 2 e to the power 2x है t into square root of t square minus root 5 रो स्क्वायर. ओके देन ए जो 2 टा अछि डिनोमिनेटर 2 अछि दैट मींस एटा 1 by 2 कांस्टेंट बाहर नि जाओ तने पाइबा कोन ना 1 by 2 integration of dt by t into square root of t square minus root 5 रो square by the formula integration of dx by x into square root of x square minus a square is equal to 1 by a sec inverse x by a plus c. We will get 1 by 2 into 1 by root 5 sec inverse t by root 5 plus c which is equal to 1 by 2 root 5 sec inverse t is your e to the power 2x by root 5 plus c हैला. देन थर्ड क्वेश्चन कोन दै छी एटा बेटर वे होउची पिला माने तुम सब आगे कसिबो मुता प्रोसीजर सब कहि देलेनी तुम आगे कसिबो तापर वीडियो देखिकी चेक करिवो तुम केते भूल कला ठीक कला हेले तुम कोन करिवो ना आगो गुटे डेवलप करि परिवो. देन आई भी थर्ड आई दे छी इंटीग्रेशन ऑफ dx by x into ln x into square root of ln x whole square minus 4. ना मार्केट आमे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर टाको x से डिवाइड कर दबा को x रे डिवाइड करो तने ठीक है तब बा 1 by x मल्टीप्लाई करो 1 by x into dx by एटी x कैंसिल हो जिवो ln x into square root of ln x रो स्क्वायर minus 4. Then let ln x is equal to t that implies d by dx of ln x is equal to dt by dx that implies 1 by x into dx is equal to dt. So now we can write dt in case of 1 by x dx dt by ln x is 0 t whole under root 2 t square minus 2 square by the formula integration of dx by x into square root of x square minus a square is equal to 1 by a sec inverse x by a plus c. This is equal to now 1 by 2 sec inverse t by 2 plus c which is equal to 1 by 2 sec inverse t is your ln x by 2 plus c हैला. तापर कोन दै छी IV question integration of sec theta into d theta by sin theta into square root of 3 tan square theta minus 4 ना minus 1
ये पिला माने लक्ष्य कर ये सब बहुत मैक्सिमम पिलांकर डाउट बाहर ये कौन करेंगे जापारती लक्ष्य कर मुझे कौन कहूँ ये बर्तमान देख सेक थीटा इंटू डी थीटा बाय साइन थीटा आमको निश्चित भाव यहीटा को एक्स स्क्वायर करा पड़ो यहाँ यदि एक्स स्क्वायर करुचे ताले कहार स्क्वायर हम ना √3 tan थीटार स्क्वायर हम -1 मुझे ये नौची √3 tan थीटा इज इक्वल टू टी ताहले डी बाय डी थीटा ऑफ √3 tan थीटा केते हबो ना dt बाय डी थीटा सो दैट इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू कांस्टेंट tan थीटा रा डेरिवेटिव है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज योर नाउ dt अच्छा मु कौन करी ना √3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा जगह dt लिखि पारि ये तो नाही तेणु मुझे सेटा को फॉर्म करुँची कौन करी ना ये √3 sec थीटा गोटा गुणी दूची इंटू रहा केते ना sec थीटा इंटू डी थीटा गुणी देले मोर √3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो डिवाइडेड बाय जदि मु न्यूमरेटर रे गुणुची डिनोमिनेटर रे भी गुणीबी डिनोमिनेटर गुणले कौन हम ताहले ना √3 sec थीटा इंटू साइन थीटा इंटू होल अंडर रूट √3 tan थीटा होल स्क्वायर -1 नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ये रहा √3 मार्केट sec थीटा इज योर 1 बाय cos थीटा sec थीटा कौन लिखि पारिबा 1 बाय cos ताले एटा केते हो sin इंटू 1 बाय cos ले sin थीटा बाय cos थीटा जोटा को हमें tan थीटा लिखि पारिबा तेनु एटे गेला √3 tan थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ √3 tan थीटा रो होल स्क्वायर -1 now this is equal to integration of देखो √3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा जगह कौन बसेबा dt so dt by t into square root of t square -1 which is equal to 1 square 1 by a sec inverse x by a plus ये फॉर्मूला लिखिबो 1 by 1 हैला 1 sec inverse t हैला केते √3 tan theta by 1 is your only √3 tan theta plus c हैला ए क्वेश्चन टा ध्यान दे देखिबो ता प्रैक्टिस करिया भलो कि मन रखिबो देन your v integration of dx by x into square root of x to the power 14 minus एटी लक्ष्य कर एटी मध्य सेम प्रोसीजर एटी लक्ष्य कर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एटी आमको x टू दी पावर 7 रो स्क्वायर करिया पड़िबो जदि x टू दी पावर 7 रो स्क्वायर करूचे ताले हमको सब्स्टिट्यूट मध्य करिया पड़िबो x टू दी पावर 7 इज इक्वल टू t दैट इंप्लाइज d by dx of x to the power 7 is equal to dt by dx that implies 7x to the power 6 into dx is equal to dt तेणु आपको कर दियो 7x to the power 6 into dx by तले 7x to the power 6 गुणिबा यदि तले 7x to the power 6 टा मल्टीप्लाई करूचे एटा हिजो 7x to the power 7 into square root of x to the power 7 रो स्क्वायर minus b रो स्क्वायर which is equal to integration of 7x to the power 6 into dx जगह बसेबा dt by 7 x to the power 7 जगह t into square root of t square minus b square which is equal to 1 by 7 ये जो 7 टा कांस्टेंट बाहर पळेबो 1 by 7 हे जिवो आ रहिबो कते इंटीग्रेशन ऑफ dt by t into square root of t square minus b square which is equal to 1 by 7 into 1 by a जगह अछि b sec inverse t by b plus c which is equal to 1 by 7b sec inverse t is your x to the power 7 by b plus c ये फॉर्मूला लिखिबो हैला
नेक्स्ट vi देख पिला vi कौन है देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू dx एटा कर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 प्लस 3 बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू dx देन व्हिच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एगोटा x कैंसिल हो x बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू dx प्लस 3 बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 इंटू dx व्हिच इज इक्वल टू I1 plus I2. So what is your I1? Integration of x into dx by square root of x square minus 4. ऊपर रहा linear form और तले रहा quadratic form इटा direct t नहीं जीवो. So let x square minus 4 is equal to t. That implies d by dx of x square minus 4 is equal to dt by dx, which implies 2x into dx is equal to dt, implies x into dx is equal to half dt. हमें सब्स्टिट्यूट करि पारुछे तेणु सब्स्टिट्यूट करि कराबो. Then this is equal to integration of half dt divided by root t 1/2 constant गला. डिनोमिनेटर अछि root t means t to the power 1/2 सेटा न्यूमरेटर को जीवो हेगला t to the power -1/2 into dt बुझी पारलो. then 1/2 x to the power n फॉर्मूला t to the power -1/2 plus 1 हेले केते हबो एकातर लिख दियो +1/2 by +1/2 plus c1 हाफ हाफ कैंसिल हेले t to the power 1/2 means root t plus c1 is equal to root c0 x square -4 plus c1 हेला. एटा कौन I1. अच्छा I2 टा कौन I2 is your now I2 is equal to integration of 3 by x into square root of x square -4 into dx is equal to 3 is your constant. Integration of dx by x into square root of x square -2 square which is equal to 3 into 1 by a sec inverse x by a plus c2 is equal to 3 by 2 sec inverse x by 2 plus c2. So therefore integration of this is equal to हमें कौन नहीं थिले ना I1 plus I2. I1 र वैल्यू केते बाहर थिला ता इंटीग्रल टा ना रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर -4 प्लस c1 प्लस I2 टा केते हला 3/2 sec inverse x by 2 plus c2 which is equal to square root of x square -4 plus 3/2 sec inverse x by 2 plus c1 c2 मिसे गोटा कांस्टेंट c हे गेला हैला. नेक्स्ट this integration of dx by b double it x plus 1 into square root of x square plus 2x minus 3 integration of dx by x plus 1 होल इंटू आपको कही परिबा एटी बर्तन देखो
तुमर स्क्वायर रूट थाउ बा न थाउ बहुत केस रे तुमर ए जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टा कंप्लीटिंग दी स्क्वायर करिया पड़िबो एटा को जदी कंप्लीटिंग दी स्क्वायर करा जाए ताले एटा कोन हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 कर दियो 1 माइनस 4 हेले माइनस 3 हेले कोन हो ना एटा हेगला इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एटा हेगला x प्लस 1 रो स्क्वायर माइनस 2 रो स्क्वायर एटा केते हला x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टा हेगला x प्लस 1 रो स्क्वायर और एला माइनस 4 कहले 2 रो स्क्वायर आगो तापर नियर लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t that implies d by dx of x plus 1 is equal to dt by dx x plus 1 रा डेरिवेटिव केते हला 1 into dx is equal to dt so this is equal to integration of dt by t into square root of t square minus 2 square एटा हबो केते 1 by a sec inverse x by a plus c which is equal to 1 by 2 sec inverse t is your x plus 1 by 2 plus c. Okay, then v third I. ভিতরে কোন দেইছি इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 नहीं अच्छा ये देखो ताको करि परिबा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3 4 टाको बाय ये रहिला x प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 व्हिच इज इक्वल काइन कले ना एटा बर्तन x प्लस 1 रो स्क्वायर करिबा रहिला प्लस 3 बाय x प्लस 1 into whole under root x square plus 2x minus 3 into dx integration of x plus 1 square by x plus 1 into square root of x square plus 2x minus 3 plus 3 by x plus 1 into square root of x square plus 2x minus 3 whole into dx which is equal to now mark it एटी गोटा x plus 1 कटि जीवो ऊपर रहिबो x plus 1 by whole under root x square plus 2x minus 3 into dx गोटे plus 3 by x plus 1 into square root of x square plus 2x minus 3 which is equal to I1 plus I2. So in case of I1 mark करो तुमर स्क्वायर रूट थिले भी तळे अछि डिनोमिनेटर रे ओटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर अछि लिनियर एक्सप्रेशन किंतु एठी जदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिनियर एक्सप्रेशन रे हम कहितली आर जदि डेरिवेटिव देखिबा सीधा सलक 2x plus 2 2 कॉमन नेले x plus 1 हे जाउछि तेनु ताको आउ किछि रिफॉर्म करबा दरकार नै सो नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x minus 3 into dx पाई तो मैंने लेट x स्क्वायर प्लस 2x minus 3 is equal to y which implies d by dx of x square plus 2x minus 3 is equal to dy by dx which implies 2x plus 2 whole into dx is equal to dy or that implies 2 into x plus 1 into dx is equal to dy which implies x plus 1 into dx is equal to half into dy.
So now this is equal to half into dy divided by root y. Half is your constant. Root y, y to the power 1 by 2. सेटा ऊपर को गले हेगला y to the power minus 1 by 2 into dy. Then next to the power n apply करो. Y to the power minus half plus 1 हेले 1 by 2 by 1 by 2 plus c1. 1 by 2 cancel हेगले. Y to the power 1 by 2 means root y, which is equal to root y is your x square plus 2x minus 3 plus c1. है ना? Then I2. So what is your I2? I2 is your now integration of 3 by x plus 1 into square root of x square plus 2x plus 3 minus 3. Then this is equal to integration of 3 into dx by x plus 1 into square root of x square plus 2x plus 1 minus 4. Then this is equal to 3 integration of dx by x plus 1 into square root of x plus 1 square minus 4. Then let x plus 1 is equal to z. सेठी y नहीं थिले एटी z नहीं परिबो t नहीं परिबो जा भी नहीं परिबो. Then that implies d by dx of x plus 1 is equal to dz by dx. That implies a derivative 1 into dx dx is equal to dz. So which is equal to 3 into integration of dz by z into square root of z square minus 2 square, which is equal to 3 into 1 by a sec inverse z by 2 plus c2, which is equal to 3 by 2 sec inverse z by z is your x plus 1 by 2 plus c2. It I1 and I2. So therefore the integration of question कौन थिला x square plus 2x plus 4 divided by x plus 1 into square root of x square plus 2x minus 3 into dx नहीं is equal to I1 plus I2 होतला. I1 केते होजी square root of x square plus 2x minus 3 plus c1 plus I2 है 3 by 2 sec inverse x plus 1 by 2 plus c2, which is equal to square root of x square plus 2x minus 3 plus 3 by 2 sec inverse x plus 1 by 2 plus c1 plus c2 is your c. This is the answer. Okay.